चला इब्राहिम आएगा कर लो इब्राहिम आओ जल्दी से आप भी अपना इब्राहिम आओ Assalamu alaikum students. Open your books. जी पेज नंबर इज 53. We start from spinal cord today. Okay, yesterday we have studied about the nervous system, brain, and now we have to start today from spine. So what we have studied yesterday about the nervous system, that the nervous system is the system in our body which coordinates messages around the body, the messages which comes through nerves, through a network of nerves, they reach the brain, and through brain it produces a response, and then the nerves carry the response towards different parts of the body, towards the part of the body. Okay, so now spinal cord. What is spinal cord? The spinal cord is the underlying thick bundle of nerves that extends downwards from the base of the brain. Okay, spinal cord is starting from the base of the brain, as you can see in this picture. The spinal cord is starting, as you can see in this picture, that the spinal cord is starting from the base of the brain. Okay, it is starting from the base. It means the end point of the brain is the starting point of the spinal cord. जहाँ पर brain end हो रहा है वहाँ से spinal cord शुरू हो रही है. So the spinal cord is at the base of the brain. It is a thick bundle of nerves. As you can see, it is this is spinal cord, and they have shown you a spiral structure. Okay, यानी उन्होंने आपको एक वेवी स्ट्रक्चर दिखाया. क्यों दिखाया? ताकि आपको ये समझ लग सके कि it helps in bending. अगर spinal cord एक बोन से बनी होती, if it is made of a single bone, then we won't be able to bend our body. फिर हम अपनी बॉडी को बेंड नहीं कर सकते थे. ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर इज 53. जी कौन सा चैप्टर? इट्स चैप्टर नंबर 6. ये कौन सा? It's chapter number 6, page number 53, spinal cord. Okay, so the spinal cord is a thick bundle of nerves. As we have studied, that spinal cord extends downward from the brain. Yes, I was telling you, if it is made up of a single long bone, then we won't be able to bend. फिर हम bend नहीं कर सकते थे. We are able to bend because it is made up of 33 small bones. It is not made up of a single bone. It is made up of 33 small bones. ये कितनी bones से मिलकर बना है? 33 small bones. Okay, and with the help of these bones we can bend. So, and in other words, these 33 small bones are also called vertebrae. So now the spinal cord is a thick bundle of nerves, and it extends downwards from the base of the brain. It is enclosed and protected by the backbone. स्पाइनल कॉर्ड जो है बेसिकली वो तो बैकबोन हमने पढ़ी थी ना कि बैकबोन जो है इट इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्राइज. सो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये बैकबोन के अंदर होती है. इट इज इनसाइड द बैकबोन. ओके, इट इज एनक्लोज्ड मींस इट इज प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन. इट इज प्रिजर्व्ड विद इन द बैकबोन. ये बैकबोन के अंदर होती है. इट इज इनसाइड द बैकबोन एंड इट protects the backbone protects the spinal cord. The spinal cord is a network of nerves. It is a bundle of nerves. As you can see, it is a bundle of, ये देख रही हैं आप कि इसमें से जो ये जो मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये क्या है कि ये नर्व्स इसमें से ओरिजिनेट होती हैं. ओके, नर्व्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड.
ओके, नर्व्स फ्रॉम द हेड रीजन आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन. जो हमारे हेड में नर्व्स होती हैं, जैसे ये हमारा हेड रीजन है ना, दिस इज आवर हेड रीजन. So the nerves which are in the head region of the brain, are connected to the brain. जो nerves head region में होती हैं वो किसके साथ connected होती हैं? Brain के साथ. Are directly connected to the brain. Nerves from all other parts of the body, और जो बाकी parts हैं body के, उससे nerves किसके साथ connected होती हैं? To the spinal cord. Okay? Means जो head region में nerves हैं, they are to the brain. And the nerves from जो बाकी हमारी body parts हैं, हमारे arms, legs, all these body parts, जो nerves हैं, the nerves from all these body parts are connected to the spinal cord. वो किसके साथ connected होती हैं? Spinal cord के साथ. और spinal cord का direct connection किसके साथ होता है? Brain के साथ. Because we have studied that spinal cord is present at the base of the brain. Where is spinal cord located? It is at the, ये देख रही हैं आप, at the base of the brain. So that's why the spinal cord is directly connected to the brain. It means that if nerves from arms or legs or any other body part carry messages towards the spinal cord, वो कहाँ message लाती हैं? Spinal cord की तरफ. And the spinal cord takes messages to the brain. Nerves from the spinal cord takes messages to the brain. फिर spinal cord से messages कहाँ जाते हैं? Brain में जाते हैं. So the messages travel to and fro between the brain and the rest of the body through the spinal cord. यानी कि messages जो हैं वो body parts से किस में आते हैं? Spinal cord में, and then from the spinal cord into the brain. Okay, and the nerves from the head region, they are directly connected to the brain. They take the messages to the brain directly. जो हेड रीजन की नर्व्स हैं, उन्हें अगर फॉर एग्जांपल किसी की हेड इंजरी हो गई है या कुछ इस तरह का है, तो वो जो नर्व्स वहाँ प्रेजेंट हैं, वो मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड में नहीं लेकर आएगी. दे विल नॉट टेक मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, दे विल टेक मैसेज डायरेक्टली टू द ब्रेन. वो डायरेक्टली मैसेज किस तक ले जाएंगी? ब्रेन तक ले जाएंगी. And the rest of the body through the spinal cord. So this is the structure of spinal cord. A spinal cord is a thick bundle of nerves and it is extending downward from the base of the brain. It is protected inside the backbone. Nerves from the head region are connected to the brain, and nerves from all our parts are connected. If a needle is break in our hand, अगर एक needle हमारे हाथ में चुभ गई है, so the receptors, the nerves present there, they take the messages towards the spinal cord, and then from the spinal cord towards the brain. और अगर हमारे जो है वो हेड में कोई चोट आ गई है, यानी कोई मतलब इंजरी हो गई है, तो वो जो नर्व्स वहाँ प्रेजेंट होंगी हेड में, they will take message directly to the brain. वो वहीं से डायरेक्टली ब्रेन में मैसेज ले जाएंगी. They will not move into the spinal cord. ठीक है, वो spinal cord की तरफ मूव नहीं करेंगे. So this is spinal cord. This is the functioning of spinal cord. Now nerves. Now we have to study nerves. So what are nerves? Yes, Zainab. First you tell me what we have studied about spinal cord. Which? What is spinal cord? स्पाइनल कॉर्ड टीचर मैं उर्दू में बता दूं. Why? क्या उर्दू में बता दूं? Try to speak in English. If the needle is going in our finger, क्या उर्दू में बता दूं? Break in our finger. चलिए बताएं, उर्दू में बता दें. जो अगर नीडल कोई हमारे फिंगर पर लग जाती है तो फिर नर्व्स और ब्रेन को मदद करती है. Okay, anyone else can explain? Ji, Marich, you can tell. Yes, Marich, what is spinal cord? The spinal cord. Yes. Okay, where is it located? Where is it located? कहाँ present होती है ये?
टीचर ये होती है In spinal cord English? is a thick bundle of nerve stems and it's Where, rest of the body. I'm saying where is it present? कहाँ present होती है ये? It is enclosed and Yes, it is enclosed and protected by the backbone. जी ठीक है, good. It is enclosed and so I have asked Marij where spinal cord is located. So where is it located? It is enclosed and protected by the backbone. Okay, now yes, Usman, you can tell me. So what is the function of spinal cord? Yes, what does spinal cord do? Why is it present in our body? Ji, unmute yourself. Ji, Usman. Ji, students, try to participate. Try to speak, okay? What is originating from the spinal cord? What are you seeing in this picture? क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, who will tell me? Yes. Students, I have told you that nerves are originating from the spinal cord. We have studied that nerves are originating. जो आपको hair-like structure नजर आ रही है, क्या है? These are the nerves. Nerves are originating. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि nervous system में 3 basic structures हमने पढ़ने हैं, which is first is brain जो कि मैंने पढ़ा दिया है, okay. Second is spinal cord and third जो भी हमने पढ़ना है वो है nerves. So what is originating? हमारी पूरी body में क्या चीज जो है वो common है? Nerves. Nerves are present everywhere in our body. Each and every part of our body, in our fingers, in our arms, in our legs, in our foot, in our toes, in every part of the body. Okay, so I've told you what is the major function of the spinal cord, that nerves from the body, they take the message towards the spinal cord and then towards the brain, from the spinal cord to the brain. Okay, and the nerves which are in the head region, क्योंकि वो head region में है इसलिए उन्हें spinal cord पे जाने की जरूरत नहीं है. They don't need to go towards the spinal cord. Okay, they are directly connected to the brain. वो directly connected है brain के साथ. तो अगर हमें जो है वो कोई head injury होती है या कोई इस तरह से कोई issue है तो जो nerves head region में present है they will directly take the message to the brain. वो directly brain को बताएंगी. ठीक है, डायरी अगर कोई चोट लग गई है हमारे हेड रीजन पे तो वहां जो नर्व्स प्रेजेंट होंगी वो डायरेक्टली मैसेज कहाँ लेके जाएंगी? ब्रेन में. वो स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज लेकर नहीं जाएंगी बिकॉज देयर इज नो नीड टू मूव टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड. दे विल जस्ट टेक द मैसेज टू द ब्रेन. ओके, सो नेक्स्ट इज नर्व्स. व्हाट आर नर्व्स? अब नर्व्स क्या होती है पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसका दोबारा से ओवरव्यू करते हैं. जैसे आप ये पिक्चर देखिए, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं आपके टॉपिक की तरफ जाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टिमुलस. व्हाट इज इट? इट इज स्टिमुलस. यानी एक स्टिमुलस है, इट इज अ ग्लास ऑफ वाटर और सम ड्रिंक. ठीक है, ये वाटर है या जूस का कोई ग्लास है जो भी है. अब रिसेप्टर क्या है? आई रिसेप्टर. अब यानी हमारी आईज जो है वो देख रही है, द आईज आर वॉचिंग, आईज आर सीइंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके,
Now the nerves which are present in the eyes, अब जो nerves यहाँ पर present है, ठीक है, वो यानी वो कौन सी nerves होंगी? Sensory neurons. वो nerves कौन सी है? Sensory neuron. They take the messages towards the brain. क्योंकि ये अब हमारी किसकी बात हो रही है? eyes की. तो eyes से मैसेज डायरेक्टली कहाँ जाएगा? ब्रेन में. क्योंकि हमने पढ़ा ना जो हमारे हेड रीजन में है वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है? ब्रेन के साथ. लेकिन अगर ये आप बात करते किसी आम की, यानी अगर वो अभी नीडल वाली पिक्चर भी आगे आएगी, उसको भी आप लोग जो है वो स्टडी करेंगे तो उसमें भी आपको समझ आएगा कि वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है. मैंने आपको पहले नर्व्स इसलिए टॉपिक समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को फिर ही स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की भी मतलब जो रिलेशन है उसका वो समझ आएगा. तो अब आप ये देखें कि जो स्टिमुलस है, द स्टिमुलस इज वाटर एंड द आइज जस्ट वॉचेज इट. ठीक है, यानी आइज जो है रिसेप्टर है, दे आर रिसीविंग द स्टिमुलस, वो स्टिमुलस रिसीव कर रही है. ओके, द सेंसरी न्यूरॉन्स, अब सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ से जो मैसेज है वो किसकी तरफ लेके जाएंगी? ब्रेन की तरफ. फॉर एग्जाम्पल यू आर थर्स्टी, यू वांट टू ड्रिंक वाटर और आपके सामने पानी रखा हुआ है. अब आपका रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट होगा? मीन्स हाउ विल यू ड्रिंक द वाटर? आप किस तरह से जो है वो उस वाटर को ड्रिंक करेंगे? हाउ विल यू ड्रिंक दैट वाटर? वो रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होना है ना, बेसिक पॉइंट ये है कि हाउ द रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस. हाउ विल यू ड्रिंक द वाटर, यानी आपको क्यों प्यास लगेगी, मतलब यानी अगर आपको प्यास लग रही है तो आपको कैसे पता लगेगा? तो ये इधर पॉइंट ये है. ठीक है, तो when you see a stimulus, your eyes are receiving it. The nerves present over there, these are sensory nerves. ठीक है, sensory neurons. They take the messages towards the brain. वो मैसेज कहाँ लेके जाएंगी? ब्रेन की तरफ. Then the motor neurons, relay neuron आप नहीं देखें क्योंकि relay neuron आपने नहीं पढ़नी, so you just move towards the motor neuron. यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज ब्रेन की तरफ लेकर आएंगी और जो ब्रेन है वो मैसेज कहाँ भेजेगा? मैसेज किसके जरिए भेजेगा? थ्रू मोटर न्यूरॉन टुवर्ड्स द इफेक्टर्स. इफेक्टर्स क्या होते हैं ये भी अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे. व्हाट आर इफेक्टर्स? इफेक्टर्स जो है विच प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट, यानी जो आपका इफेक्ट होगा वो किसने प्रोड्यूस करना है? मसल्स ने. इफेक्टर्स आर बेसिकली मसल्स. जो मसल्स हमारे हैंड्स पे, आर्म्स पे प्रेजेंट है ना, these are called effectors. So the effectors produces a response. Effectors drinks the causes the arm to move forward and drink the water. Okay, the motor neurons which carries the messages towards the arm, towards the effectors. Anywhere are effectors present? Effectors are the muscles. Then they cause the arm to drink water. Means it produces a response. अब देखिए response produce हो गया है ना? Response is produced. Okay, we are drinking water, and how it is produced? Through relationship of sensory neurons with the brain and motor neurons. ठीक है, यानी ये जो relationship है neurons का, ये भी हमने स्टडी करना है कि ये रिलेशनशिप. अभी हम इस पिक्चर को दोबारा मैं बताती हूँ. फर्स्टली वी मूव टुवर्ड्स नर्व्स. ओके, सो व्हाट आर नर्व्स? नर्व्स होती क्या है? Underline the definition in your books. Nerves are thin thread-like structures spread throughout the body. Nerves are what? Nerves are thread-like structure. जैसे आपको यहाँ पे भी nerves नजर आ रही है ना, ये कैसा structure है? Thread की तरह. It like a thread-like structure, and it is spreading throughout the body. It is present throughout the body. They are like telephone wires. जैसे आपकी telephone wires होती है ना, जो कि कनेक्ट करती हैं एक से दूसरी जगह पर, मतलब टेलीफोन वायर्स जो हैं वो एक से दूसरे घर को कनेक्ट करती हैं, ऑफिसेस को कनेक्ट करती हैं. सो these are like nerves are like telephone wires, and they connect and carry messages between every part of the body. ये कहाँ messages carry करते हैं? Between every part of the body and the main control center, the brain. Now we have to study their types. अब हमने इनकी टाइप स्टडी करनी है. We have to study there are 3 types of nerves. How many types of nerves are there? 3 types. Sensory, motor and mixed. How many? Sensory, motor and mixed. 3 types of nerves are present. Sensory, motor and mixed. Firstly, sensory nerves. Sensory nerves send signals from the sense organs to the brain or the spinal cord. Underline this line.
सेंसरी नर्व्स जो है वो मैसेजेस किसके मतलब कहाँ लेके जाती हैं? टू द ब्रेन। अगर तो वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तो वो आपके हेड रीजन में प्रेजेंट है वो सेंस ऑर्गन, ठीक है, अगर वो सेंस ऑर्गन आपके हेड रीजन में प्रेजेंट है तो इट विल डायरेक्टली कनेक्ट दिस सिग्नल टू द ब्रेन. If the sense organ is somewhere else, like बाकी सारे सेंस ऑर्गन जैसे नोज है, आईज हैं, ईयर्स हैं और टंग है, ये सब तो हमारे कौन से रीजन में प्रेजेंट है? हेड रीजन में. इट मीन्स कि ये तो जो हेड रीजन वाले हैं ये 4 की 4 सेंस ऑर्गन्स किसके साथ कनेक्टेड है? डायरेक्टली टू द ब्रेन. बट वन सेंस ऑर्गन इज लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज स्किन. अब स्किन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन द हेड रीजन. अब वो सिर्फ हेड रीजन में तो नहीं है ना, स्किन तो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है. Okay, skin is present throughout your body. So the sensory nerves send signals from the sense organs to the brain. और दस अब इसलिए उन्होंने आगे लिखा है और the spinal cord, क्योंकि बेसिकली सेंसरी नर्व्स अगर सेंस ऑर्गन्स तो हमारे जो 4 सेंस ऑर्गन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? ऑन आवर हेड रीजन. वो हमारे हेड रीजन पे यानी हमारे फेस पे और हमारे हेड पर प्रेजेंट है, यानी हमारे जो ईयर्स हैं. ओके, but one sense organ, that is the skin, which is not present on our head region, it is present throughout our body, and it sends signals from the sense organs to the brain or the spinal cord. So sensory nerve sends signals from the sense organs to the brain or the spine. Okay, in your books you are seeing a picture. अभी आपको books में एक picture नजर आ रही है, as you can see over here. That it is a plant. आपको क्या नजर आ रहा है? Plant. You are seeing a plant. And as you are seeing the plant, so which organ, which sense organ is seen? हमारा कौन सा sense organ जो है देखता है? Which sense organ is for sight, for vision? जी दुआ. Which sense organ is for sight? Yes, Dua. Which sense organ is used for seeing things? आप किससे देखती हैं? Through which body part? Eyes. जी, eyes. We see through eyes. So eyes are responsible for seeing. Now in this picture, as you can see, this boy is seeing plants. This boy is seeing plants. So the sensory nerves, which now the receptor, the eyes receptor, they will give message to the sensory nerves. अब वो receptor message किसको देंगे? Sensory. हमें नहीं पता कि हम क्या देख रहे हैं. जब तक हमारा ब्रेन हमें नहीं बताएगा ना, तब तक हमें नहीं पता what we are watching. Until then our brain tells us. Okay? जैसे अभी आप अपनी बुक देख रहे हैं तो ये आपको किस तरह से नजर आ रहा है कि आपकी बुक है, किस तरह आपका एक स्ट्रेट इमेज बन रहा है थ्रू योर ब्रेन, बिकॉज द ब्रेन इज द ऑर्गन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो नाउ eyes receptor give the messages to the sensory nerve. Okay, and then the sensory nerves take the messages towards the brain. अब क्योंकि ये eyes हैं and they are present in the head region, यानी face पे present है ये, तो ये directly किसके साथ connected है? To the brain. Now sensory nerves take the messages to the brain. The brain produces a response. अब brain हमें बताएगा what we are watching. The brain tells us what we are watching. यानी जो response है वो किसने produce करना है? brain ने. The brain produces a response, and then how the response is carried? Again, just sensory nerves carry करती response को? No, the response is carried by the motor nerves. अब motor nerves message कहाँ carry करेंगी? brain का response कहाँ carry करेंगी? Towards the effectors. और effectors क्या होते हैं? muscles और glands. Effectors जो है वो दो ही होते हैं, या तो वो muscles हैं या वो glands हैं. Effectors are muscles and glands. These are effectors which produces
which creates an effect. So the response which is produced by the brain is carried by the motor nerves towards the effectors, and then our hand touches the flowers. आप अपनी बुक पे देखिए, उन्होंने दिखाया कि वो हैंड जैसे ही उसको रिस्पॉन्स मिलेगा इफेक्टर्स को, यानी मसल्स को, ठीक है, मसल लिखा हुआ है ना, तो मसल causes the arm to move forward and touch the flowers. So this is the role of nerves in our recognition, understanding, watching, perceiving things, watching things, ठीक है. तो ये सब जो है ये किसके जरिए होता है? Through our nerves. So these are the sensory nerves. अब आपको समझ में लगी, sensory nerves send signals from the sense organs to the brain or the spinal cord. They mostly connect to the brain through the spinal cord. या वो spinal cord के जरिए directly connect हो जाते हैं brain के साथ. Now motor nerves. So what are motor nerves? मैंने अभी आपको बताया motor nerves send signals from the brain to the muscles and carry signals. Send back signals से बेहतर है आप कहें कि carry signals from the brain to the muscles and glands in the body. Underline कर लें, कहाँ message carry करते हैं? From the brain to the muscles and glands in the body. These signals make the muscles move. इसकी वजह से हमारे जो muscles हैं वो move करते हैं, और जो glands हैं वो क्या secrete करते हैं? Juices. Okay, the glands secrete because of these muscles. The glands, because of these response, the glands secrete juices. कौन से juices? जैसे for example like salivary glands. Salivary glands जैसे ही आपको एक खाने की aroma जो है, if you just smell a good aroma of a good food, then your mouth waters. So this is also a this is also a kind of signal. Okay, this is also a kind of a signal which is carried by the motor nerves. So next is mixed nerves. What are mixed nerves? Mixed nerves send signals from the sense organ to the brain, okay, and as well as carry messages from the brain to the sense organs. Mixed nerves are both. They carry the signals from the sense organs towards the brain, as well as they carry messages from the brain towards the sense organs. So they have both functions. Likewise, they carry messages from the sense organs to the brain, as well as they carry messages from the brain to the sense organs. So both functions are played by the mixed nerves. So next topic is reflex action, but we will study the reflex action in the next lecture. Now you will tell me about nerves. What are sensory nerves? What we have okay, first I will explain the picture again. Like as you have seen in this picture, now you understand what is this picture. This picture is that a stimulus, like a water is present and you want to drink water. Your eyes are your eye receptors are looking at the water, at the glass of water, means you want to drink it. But how will you drink it? Only you will drink water only when the sensory nerves present, when the receptors give the message to the sensory nerves, and the sensory nerves carry the messages to, as you are seeing in this picture, that the sensory nerves carry the messages towards the brain, and the brain carry the messages towards the the brain produces a response, and the response is carried by the motor neurons towards the effectors. So what are effectors? The effectors creates the response and causes the arm to move forward and drink water. So this is how neurons carry messages. Yes, now who will explain me about what is sensory nerve? Send messages to brain. Yes, to the brain, or and also to the spinal cord. Yes, in case if they are not in present the head region, then they will send signal to the spinal cord. Good. Okay, what is the function of motor neuron? Yes, next Dua. G, what does motor neurons do?
Yes, Dua. As you can see in this picture, what are motor neurons doing? What is their function? Brain. They carry messages from Brain. which part? From the brain. Yes, they carry messages from the brain towards the, और कहाँ लेके जाते? Where they take the messages towards the muscles and glands. They carry the messages towards the muscles and glands. Okay, Usman, you. वाटर में लेके जाएंगे. Yes, Usman, you can tell me. Unmute yourself. Ji, unmute yourself. Yes, Marish, you can tell me. Motor nervous. Motor nerves. It's not nervous, it's nerves. Ji, motor nerves. Miss, motor nerves. Motor nerves send signals back from the brain to the muscles. Yes, motor nerves take signals from the brain to the muscles and produces a response. Muscles and glands. Okay. So, what is receptor? Nobody asked me what is a receptor. What are receptors? Can anyone tell me? G, what are receptors? Receptors are our sense organs. The sense organs are also called receptors. Like eyes, ears, nose, tongue, skin. These are all receptors. Okay. They receive the things and then the messages are carried by nerves towards all parts, towards the brain or the spinal cord, and then the brain produces a response, and the response is carried by the motor neurons towards the muscles and glands to create a response. Okay. Okay, can anyone tell me the relationship between sensory neuron and motor neuron? What is the role of sensory neuron and motor neuron? Ji Usman, now you tell me. Students, unmute yourself. I have unmuted all of you. Ji Usman. Okay, so what is spinal cord? What we have studied in the spinal cord? Who will tell me what is spinal cord? The spinal cord is a thick bundle of nerves. Yes, good. It's a bundle of nerves. Where is it located? It is Usman, you are not unmuting yourself. It is enclosed and protected by the backbone. Yes, good. It is enclosed and protected by the backbone. Okay, how many types of nerves we have studied today? Sensory nerve, motor nerve, and mixed nerve. Okay, what is the function of mixed nerves? Yes, anyone can tell me. The mixed nerves send message to organs, to the brain.
Yes, and carry messages from the brain to the sense organs as well. Okay, who can explain this diagram? G. Yes, students, can you explain this diagram? Teacher, this whenever I see cytomolus like water, a sensory neuron send message to brain and motor neuron send message to our organs. Yes, good. Towards our And muscles. And produces a response. Okay, students, so today we have studied the nervous system, the three parts of the nervous system, which are the brain, the spinal cord, and the nerves. So what you have उसमें जो भी मिसिंग है आपने कंप्लीट करना, फिर ही मैं आपको चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स जो है okay, this is your homework. You have to complete the question answers of first 5 chapters, and also you have to learn it. You have to revise these chapters as well.